Basic Programming. Good day everyone, I am Teacher Jo and I will be your computer teacher for the whole school year. Welcome to first quarter of our computer class, which is Basic Computer Programming. Our topic for this session is Program Life Cycle, which includes the following steps. 1.1 Specify the problem. 1.2 Analyze the problem. 1.3 Program Design to Algorithm. 1.4 Coding. 1.5 Test and Verify. 1.6 Maintain and Update. 1.7 Documentation. At the end of the topic, you will differentiate computer program from computer programmer. Identify the steps in creating a program. Identify the different types of maintenance. Differentiate syntax error from logic error. Objectives. 1. Differentiate computer program from computer programmer. 2. Identify the steps in creating a program. 3. Identify the different types of maintenance. 4. Differentiate syntax error from logic error. Lesson 1, Introduction to Programming. Topic 1, Program Life Cycle. 1.1 Specify the problem. 1.2 Analyze the problem. 1.3 Program Design to Algorithm. 1.4 Program Coding. 1.5 Test and Verify. 1.6 Maintain and Update. 1.7 Documentation. हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम बेसिकली हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। इंस्ट्रक्शंस इसमें क्या है कि जो काम हमारे कंप्यूटर ने करना है वो हम एक सेट उनका बनाएंगे उन इंस्ट्रक्शंस का, और उसे हम प्रोग्राम बोलते हैं कि कोई स्पेसिफिक काम करना है, उसके लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसमें बताया जाता है कि काम कैसे करना है, हाउ टू डू। सारा इस इंस्ट्रक्शंस में हाउ टू डू द टास्क सारा इसमें लिखा होता है। और इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स बोलते हैं। प्रोग्राम किन चीजों का बना होता है, अलग अलग स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि क्या काम करना है हमारे प्रोग्राम में। प्रोग्राम को लिखने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वर्तों करते हैं हम किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, सिंटैक्स होता है, एक रूल्स होते हैं। सिंटैक्स या फिर रूल्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे हमारे पास अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, C++ है, जावा है, सी है, और कितनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हमारे पास जिसकी यूज करके हम क्या है कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस चाहिए कि हमें काम क्या करना है। उन इंस्ट्रक्शंस का प्रॉपर क्या है, ऑर्डर होना चाहिए कि पहले ये इंस्ट्रक्शन चलनी है, फिर ये इंस्ट्रक्शन चलनी है, फिर ये इंस्ट्रक्शन चलनी है। अलग अलग ऑर्डर होना चाहिए हमारी इंस्ट्रक्शंस का कि किस ऑर्डर में काम होना चाहिए। और अगली जरूरी है इनपुट डाटा। जिस डाटा पे हमने काम करना है, प्रोग्राम का जो भी इनपुट होगा वो इनपुट डाटा को, ये तीन चीजें जो हैं जरूरी है किसी भी प्रोग्राम में। बेसिक थिंग्स है इंस्ट्रक्शन कि काम क्या करना है, उनका प्रॉपर ऑर्डर क्या होना चाहिए, एंड इनपुट डाटा जिस पे हमने काम करना है। ये था कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम ने या कंप्यूटर ने काम क्या करना है। और इस लिखते किसकी जरूरत से, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत से हम इसे लिखते हैं। अगला टॉपिक है स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। स्टेप्स इन डेवलपमेंट
प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो या इसे प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं कि प्रोग्राम कैसे डेवलप होता है, उसका साइकिल क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को, कि जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमने काम करना है वो क्या है, हमारी प्रॉब्लम को क्या है हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन अ प्रॉब्लम। उसके बाद क्या है, प्रॉब्लम हमने डिफाइन कर दी, उसके बाद डिजाइन सोल्यूशन, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है वो हम निकालेंगे। सोल्यूशन निकालने के बाद उसकी कोडिंग होगी, प्रोग्राम कोडिंग, कि इसको कंप्यूटर के इनपुट, हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से हम लिखेंगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होगा, कोडिंग होगी, तो उसकी कोडिंग करेंगे। उसके बाद अगर हमारी प्रोग्राम में की कोडिंग में कोई भी एरर आता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट एंड डीबग प्रोग्राम को क्या करेंगे, टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। जो भी एरर्स हैं उनको टेस्ट करेंगे एंड उनको क्या है, रिमूव करेंगे। अगला स्टेप है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। जो भी हमारे स्टेप्स हैं, जो भी जरूरतें हैं, उनकी हम डॉक्यूमेंटेशन, उनका एक रिटन परफॉर्मा तैयार करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के बाद क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स लागू करना। जो भी हमारा काम है उसे, जो भी हमने कोडिंग की है, जो भी सारा सिस्टम हमने तैयार किया है उसे लागू करेंगे। एंड उसके बाद अगर हमारा सिस्टम जो है वो चालू हो चुका है, उसके बाद क्या है, एरर्स वगैरह आएंगी तो उसके लिए मेंटेनेंस एंड एनहांस प्रोग्राम, उसको मेंटेन करना है, उसको सही तरीके से रखना है। इनहांस करना है मीन्स उसमें और कोई नए फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम लाइफ साइकिल प्रोग्राम। तो सबसे पहले है डिफाइन अ प्रॉब्लम। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डिफाइन प्रॉब्लम में क्या होता है, हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं सारे स्टेप्स को। सबसे पहले है डिफाइन प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा कि जो भी हमने करना है, व्हाट यू वांट टू डू, हमने देखना है कि हमने काम क्या करना है। उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए या जो भी हमारी डाटा चाहिए वो क्या चाहिए, वो इस प्रॉब्लम में हम डेफिनेशन में देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे इनपुट क्या देना है और हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, कि हमने इनपुट क्या देना है और प्रोग्राम का आउटपुट क्या आना चाहिए। तो ये सारा काम हम किस में करेंगे, प्रॉब्लम डेफिनेशन में, कि हमने काम क्या करना है, उसके लिए इनपुट क्या क्या चाहिए, आउटपुट क्या होनी चाहिए और उसके लिए हमारा डाटा क्या चाहिए। अगला है सोल्यूशन डिजाइन करना। सोल्यूशन डिजाइन करना, हमने देखना है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम का लॉजिक अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रॉब्लम का लॉजिक क्या है, जिसके साथ हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिक देखेंगे जिसके साथ हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं, डिसीजन टेबल यूज कर सकते हैं, एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें किसके लिए हैं, सोल्यूशन देखने के लिए, कि हम कैसे सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, फ्लो चार्ट के जरिए, डिसीजन टेबल के जरिए, एल्गोरिदम के जरिए। ये हमारी अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद है हमारा अगला पॉइंट था प्रोग्राम कोडिंग। प्रोग्राम की कोडिंग के लिए क्या होगा हमारे पास, कोडिंग किसके जरिए करेंगे हम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या है, अपना एक सिंटैक्स होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा हो गया, सी हो गया, C++ हो गया। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जरिए हम क्या है, कोडिंग करेंगे, ताकि जो है हमारा कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए कि क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं हम। अगला है प्रोग्राम कंपाइलेशन।
कंपाइलेशन के क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। दो तरह की लैंग्वेज होती है, ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, एंड एक मशीन लैंग्वेज। तो ये क्या होता है, हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है जो भी वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हमारी 0 एंड 1 के फॉर्म में होती है, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो कंपाइलेशन के लिए क्या यूज होता है, कंपाइलर की वरतों की जाती है। कंपाइलर क्या है, कंपाइलेशन के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद है हमारा अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में है हमारा टेस्ट एंड डीबग। हमने कंपाइलेशन कर ली, मशीन लैंग्वेज में जो है कोड कन्वर्जन हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टेस्ट एंड डीबग। टेस्टिंग में क्या होगा, हम एरर्स फाइंड आउट करेंगे, एरर्स फाइंड आउट हो गए, ठीक है। जो भी एरर्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। डीबग का मतलब है एरर रिमूव करना है। बग का मतलब होता है एरर, तो डीबग का मतलब होगा एरर को रिमूव करना। तो टेस्टिंग में एरर फाइंड आउट होगा और डीबग में एरर को रिमूव किया जाएगा। कंपाइलर जो है वो एरर फाइंड आउट करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, डीबगिंग होगी। अलग अलग तरह के एरर्स फाइंड आउट होते हैं, जैसे रन टाइम एरर होता है, लॉजिकल एरर होता है कि लॉजिक गलत है अगर हमारे प्रोग्राम में तो लॉजिकल एरर आएगा। अगर हमारे प्रोग्राम में सिंटेक्स गलत है तो सिंटेक्स एरर आएगा। तो ये क्या है, अलग अलग तरह के एरर्स हैं। उसके बाद अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको कलेक्ट करना एंड मेंटेन करना। कलेक्ट करना एंड मेंटेन करना किसको, इंफॉर्मेशन को, जो भी हमारे प्रोग्राम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना है एंड मेंटेन करना है। तो ये क्यों करते हैं, ताकि यूजर को पूरी हेल्प हो सके, यूजर को गाइडेंस करने के लिए ये चीजें इन चीजों की जरूरत पड़ती है। अगला स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन हो गई यूजर को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद क्या है, इम्प्लीमेंट करना मीन्स हमारा प्रोग्राम क्या है, रेडी टू रन है। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। लास्ट स्टेप क्या है, मेंटेन एंड इनहैंस। हमारा जो प्रोग्राम है वो लागू हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब उसका हमने क्या है, ध्यान रखना है, केयर करना है, मेंटेन करने है कि इसमें कोई भी क्या है, चेंजेस के अकॉर्डिंग उसे मेंटेन करना है, ठीक है। इनहैंस का मतलब क्या है, उसे मोर बेटर बनाना, उसमें और फीचर्स ऐड करना, उसे मोर बेटर बनाना, ठीक है। तो उसे क्या होगा, इनहैंस करना होगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं हमारे डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ती है, या हम कह सकते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। What is a computer program? Computer program is a set of step-by-step instructions that tells or directs the computer what to do. It sequences the tasks a user wants done and produces the results or output needed. Computer programmer is the person who designs a program. Life cycle. It refers to the changes made top and old to a new program. The cycle starts again. Program life cycle. A framework or discipline, which uses certain techniques needed in computer programming development. Steps in program life cycle. 1. Specify the problem. 2. Analyze the problem. 3. Program design the algorithm. 4. Program coding. 5. Test and verify. 6. Maintain and update. 7. Documentation. Step 1. Specify the problem. Specification of needs. A. What the problem is. B. What is need to solve it. C.
what the solution should provide. Step 2. Problem analysis. It investigates a situation, problem, in order to allow the researcher to understand more fully the problem, in order to recommend practical solutions for solving it. Need input number 1. Needed process number 2. Needed output number 3. Step 3. Design a program. Program design is the process that an organization uses to develop a program. In designing a program, it uses a algorithm is a sequence of instructions to solve a problem, written in human language, and it can solve any problems when it is used with the correct procedure. B. Flowchart. C. Pseudocode. It is the steps in problem solving that is written half in programming code and half in human language. The advantages are A. Easy. B. Understood. C. Easily maintained. D. The code are changeable. Examples of pseudocode. Start. Input quiz 1, quiz 2, quiz 3. Total mark equals quiz 1 plus quiz 2 plus quiz 3. Print total mark. End. D. Structure chart. An additional method in preparing programs that has many submodules. It consists rectangular boxes, which represents all the submodules in a program and is connected by arrows. It illustrates the top-down design of a program and is also known as hierarchical chart because its components are in hierarchical form. The advantage is that it is easy to be drawn and to be changed. Example of structure chart. Step 4. Program coding. It is writing problem into certain programming language such COBOL, C, C++, and others. Problem solving instructions before it is coded into programming language. Step 5. Testing and debugging. In this step, using a set of code to discover error and check program accuracy. Process testing. Input sample of data set. Executing program. Output, functioning well or error discovered. 2 types of error. 1. Syntax error. Occur when rules of programming language are not applied. Bug can be traced during compilation. Also known as compile time error. Must be corrected before executing and testing the program. Another type of error. 2. Logic error. Cannot be traced by compiler. Also known as runtime error. Corrected before problem-solving processor. The purpose of this video is to get you to be able to describe syntax errors and logic errors, and also be able to understand and identify syntax errors and logic errors. Logic errors are where code is understood and can be run by the computer, but output is not as expected or what we want it to be. And syntax errors are where the code is not understood, so cannot be run, as it does not follow the rules of the language. Now look at this video and see whether it's supposed to be demonstrating a logic error or a syntax error. Hello, Derek. I was just wondering, could I borrow your watering can? Certainly, Mr. Dalton. Chris, let him have it. So is this going to result in a logic error because the code is understood and can be run, but the output is not expected or what we want it to be? Or is it going to be a syntax error where the code is simply not understood, so cannot be run at all and does not follow the rule of the language? Hello, Derek. I was just wondering, could I borrow your watering can? Certainly, Mr. Dalton. Chris, let him have it. In the sense of give him the watering can! Oh no, I thought you meant in the sense of kill him! Oh. So that video was supposed to demonstrate a logic error because they understood the instruction, but it led to the wrong or unexpected output. Now look at this video and see whether it's supposed to be demonstrating a logic error or a syntax error. Mr. Kench, Alan
spelling bee. Cheers, Alright, cheers. Tell you what, bet bloody since you ever made this one. Well, I look around this place, I tell you, I am jubbing, just jubbing, full of beats, no doubt. I thought they talked like us. Does anyone else speak Australian? Can I get you to say, with me, how bloody are ya? We can't quite understand you. And that was supposed to demonstrate a syntax error because the language was not understood, because it didn't follow the normal language rules, and so the instructions could not be followed. Now look at this video and see whether it's supposed to be demonstrating a logic error or a syntax error. This is my new dog, Bruno, Mr. Craig. You're right. He doesn't like being held. Okay, Chris, put him down. So is this going to result in a logic error because the code is understood and can be run, but the output is not expected or what we want it to be? Or is it going to be a syntax error where the code is simply not understood, so cannot be run at all and does not follow the rule of the language? This is my new dog, Bruno, Mr. Craig. You're right. He doesn't like being held. Okay, Chris, put him down. So that video was supposed to demonstrate a logic error because they understood the instruction, but it led to the wrong or unexpected output. Now look at this video and see whether it's supposed to be demonstrating a logic error or a syntax error. Well, a very, very heavy dissertation tonight. And that was supposed to demonstrate a syntax error because the language was not understood, because it didn't follow the normal language rules, and so the instructions could not be followed. So we have covered describing syntax errors and logic errors. Now we want to move more towards understanding and identifying syntax errors and logic errors in Pythons and algorithms. When this code is run, it's not understood, so it's a syntax error. And it's a syntax error because it's not following the rules of the language, and the way it's broken the rules of the language is that it has not got the correct indentation. In this code, when we run it, it crashes because it's not following the rules of the language, so it's a syntax error. And in this case, it's because a keyword is spelled incorrectly. Here is some code to work out whether a shape is a square or not. We're testing it with this shape. So when we put these inputs in and it says a square, it's not what we expect. So it's a logic error, and it's caused by, in this case, using or instead of and, which is one of the ways which you can cause a logic error. Okay, so this video was about being able to describe syntax errors and logic errors and understand and identify syntax errors and logic errors. Logic errors are when code is understood and can be run by the computer, but the output is not what we expect or want, and it needs to be picked up by humans following a testing plan, and it could be caused by using the wrong comparative operator, greater than instead of less than, for example, or it could be caused by using and instead of or the other way around, and can be caused by the original algorithm not working as intended. Whereas syntax errors is when the code is not understood, so cannot be run, and will cause the program to crash as it does not follow the rules of the language, and it could be caused by spelling command words wrong, not ending a string with apostrophes, or making incorrect indentation. And just to show you again, these are what logic errors, these are what syntax errors are, and these are what caused them. Okay. Step 6. Maintain and update. It means a subsequent update to the programs to correct one or more defects in the programs and / or to add additional functionality. There are two types of maintenance. 1. Adaptive maintenance. Modification of properly interface with changing hardware. 2. Perfective maintenance. Implementing new system requirement after system is successful. How to do maintenance. These are any of the following. 1. Testing, test system ability. 2. Measurement, access data time. 3. Replacement, replace old system to new one. 4. Adjustment, adding need to new system. 5. Repair, repair the system to receive new data. 6. Updating, update the database.
Step 7. Documentation. It is a written graphical report of the step taken during development of program. The purpose is, it will be useful in the future in case of modification or maintenance. The content of documentation are the following: description of program, specification of program requirement, program design such as pseudocode and flowchart, list of program and comment, test result, user's manual book, program limitations and capabilities. To summarize our lesson for this session, computer program is a set of step-by-step instructions that tells or directs the computer what to do. It sequences tasks a user wants done and produces the result or output needed. Computer programmer is the person who designs a program. Life cycle, it refers to the changes made top and old to a new program. Then the cycle starts again. Program life cycle, it is a framework or discipline which uses certain techniques needed in computer programming development. The program development life cycle consists of 7 steps. Step 1, specify the problem. It involves the questions what the problem is, what is needed to solve it, what the solution should provide, and then step 2, problem analysis. Step 3, design a program, which include the use of algorithm, flowchart, pseudocode or structured chart. Step 4, program coding. Step 5, testing and debugging. Step 6, maintain and update. How to do maintenance? You have to test, measure, replace, repair and update the system. And step 7, documentation. In designing a program, it uses algorithm, flowchart, pseudocode, and structure chart. During testing and debugging, errors may occur. It may be syntax error when rules of programming languages are not applied. Syntax error is also called compile time error. Another error is the logic error, which cannot be traced by the compiler. It is also known as runtime error. Life cycle phases do not necessarily happen in a linear order, and they can be intertwined in various ways. For example, when modifying a program, programmers may need to repeatedly edit, compile, install, and execute it on their own computers to ensure sufficient quality before it can be distributed to users. Copies of the modified program are then downloaded, installed, and executed by users on their computers. I hope you really understood the lesson for this session. For our assessment, do the following activity. Directions: identify the following terms being described and write your answers on a clean short bond paper with your name, grade level and the date today. 1. This is the first step in program life cycle. 2. A written graphical report of the step taken during development of program. 3. Prepare the system to receive new data. 4. It is a process that an organization uses to develop a program. 5. It replaced old system to a new one. Differentiate the following terms. 10 points each. 1. Computer program from computer programmer. 2. Syntax error from logic error. For your assignment, in a clean short bond paper, write a short paragraph on the importance of computer programs to education and technology. I hope you guys learned a lot from our lesson for this session. See you on our next computer class.